Yaps. It's in the name. Fuck it. We'll do it live. Dhurandhar 2, huh? That shit's finally out. I can't wait to watch this on Netflix. कोशिश कर रही थी। मैंने वही सोचा कि एक मिनट थोड़ा बाहर भी चल के देखें कि माहौल क्या चल रहा है इसको लेकर। एंड ये एक बहुत ही रेयर इवेंट होता है कि जब कोई फिल्म लवर किसी मूवी के Fuck that guy. बॉक्स ऑफिस की परवाह करने लगे। ये एकदम एग्जैक्ट वैसा ही मोमेंट है कि जब आप एवेंजर्स एंड गेम की डेली नंबर्स चेक कर रहे होते हो कि एक मिनट यार इसने अवतार को बीट किया कि नहीं किया। एंड इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ कल्चर, पॉप कल्चर, कि जब मूवी इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाती है कि लोग उसके Pop culture is so important too, for not just like obviously the culture that it's in, but even when we go back and look throughout history and we see the trends for pop culture, to me it's so important or so fascinating because you get to see what was going on, right? When you look at pop culture, that's a way for you to tap in and see what inspired the people, what motivated the people, what drew their attention. And right now Indian cinema is at an all-time. नंबर्स की परवाह It's a करने great लगे movie. हैं। एंड हियर आई एम Now, नॉट Indian अबाउट movies बट get a आई lot of स्टिल rap for ट्राई टू being मेक like सम this सेंस over the top इन दीस craziness, नंबर्स। and जिसमें in अगर part they शुरू are. करें तो इनिशियली But the धुरंधर एक past मूवी की तरह three, कंसीव four की movies गई I've थी, seen have actually मगर been इसके like, लगभग 15 fuck, महीने के these are good प्रोडक्शन में movies. जाने के बाद और कंबाइंड फुटेज मिलाकर 7.5 घंटे की मूवी बनाने के बाद आदित्य धर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे Yeah. कि वो और फिल्म को शूट करना चाहते थे। एंड उन्होंने किया भी I think it's ताकि वो closer to मूवी 8 hours के than विजन को seven वो and a डेप्थ half. दे पाए जो कि ये डिजर्व करती है। Great अभी के character. लिए इसका बजट Interesting. करीबन 250 से 450 करोड़ के बीच में बताया जा रहा Yo, है, what's up, जिसमें Sticks? धुरंधर पार्ट 1 ने ही 1300 प्लस करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड की कमाई कर ली है। एंड पार्ट 2 जो कि अभी 19 मार्च को रिलीज होगा वो एग्जैक्टली पार्ट 1 से 3 महीने बाद ही रिलीज हो रहा है और वो और भी ज्यादा कमाई रखने के फोरकास्ट रख रहा है। How like grateful are you that you're growing up at a time where you don't have to wait 2, 3, 4 years for a movie to come out? Like, how long was it from Endgame to Infinity War, or Infinity War to Endgame? You know what I mean? Like, what was the turnaround time? Wasn't it like a year or 2 years for the movies to be done? Durandar dropped 3 months later. जो कि किसी भी Insane. करंट की पैन इंडियन मूवी लेट 2 years? That's what I ये thought. सपना बना हुआ है। एंड वो सारा मैजिक क्रिएट कर पा रहे हैं वो भी इतने कम I think टाइम I think में, it was जहाँ पे two फिल्म के years, मेकर्स इतने which is just कॉन्फिडेंट थे like, फिल्म को damn, you're gonna लेकर make कि us wait उन्होंने 2 years? अनाउंस किया कि वो रिलीज के एक दिन पहले शाम को पिक्चरों के पेड प्रीव्यूज रिलीज कर रहे हैं, जो कि कोई नई चीज नहीं है। हॉलीवुड पिक्चरें एंड कुछ साउथ की पिक्चरें हमेशा से करती रहती हैं, पर ऐसा Yeah. अपफ्रंट आके बोलना एक बहुत ही कॉन्फिडेंट मूड है। जहां पे अभी फिल्म की ऑफिशियल लेंथ कंफर्म हो चुकी है We're gonna see a young. जो कि Okay, 3 घंटे I 55 can't मिनट wait. की है। एड्स वगैरह सब मिलाकर 4 घंटे 5 घंटे के हिसाब से पूरा एक्सपीरियंस मान के चलो। एंड इस बात को हैरानी की बात यह है कि कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। एंड ये आदित्य धर की कॉम्पिटेंस को दिखाता है कि बंदे ने पिक्चर कितनी कमाल की बनाई है। जहां पे अब भाई लोग हर एक प्लेटफॉर्म धुरंधर की टिकट सेल्स को लेकर खुद को बोस्ट तो कर ही रहा है कि इस फिल्म ने नई सारी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। जैसे कि पीवीआर ने अभी एक पोस्ट शेयर की है जहां पे उनके प्लेटफॉर्म के लिए 1 लाख प्लस टिकट सेल्स हो चुकी हैं, जिसमें अभी की अपने ग्रोइंग नंबर्स के साथ फॉर श्योर एक हिस्टोरिक मोमेंट। Right now, I think it's. I think Durandar has a lot of good things going for it, but the biggest thing going for it, not only is it just a good story, but I think, I think hopefully everyone would agree with me on this, that with the success of Bahubali Part One, Bahubali Part Two, RRR, we're seeing these trends of consistently good quality movies focused around story and allowing the action and the action, the dancing, all of that to be second to good stories, good character development. There's like, so it's getting to run off the momentum of those two. The music has been very good, but I still think that's kind of like a subjective thing because some people are gonna like songs, some won't. The musics have been slapping on all of them though. They have Hana Mankind. You guys know I'm a big fan of that, and patriotism a bit too. Yeah, I think India right now, the Indian people are working on building this unified version of like, we are Indian, we are proud, and then pushing back against Pakistan with everything that's going on with Pakistan recently, and even on the other side of India with China. Like, I think there's a lot of cultural things that have come out for when this movie hit that people are like craving for an outlet like it. हो सकता है
जहां हमें कुछ नए रिकॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी अपने ट्रेलर अनाउंसमेंट के साथ ही इसने 27 से 28 घंटों के अंदर ही और रिलीज के सिर्फ 11 दिन पहले ही अपने सिर्फ पेड प्रीव्यूज से एडवांस बुकिंग में 9 करोड़ से नेट का ज्यादा अक्यूमुलेट पैसा बनाया है। जो कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये नंबर और भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ पोर्टल्स तो ये भी सजेस्ट करके रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्लॉक सीट्स और बुकिंग्स मिलाकर Haji Mishitata Konnichiwa. जा सकता है। एंड ऊपर से जहां ये फिल्म अपनी प्री Konnichiwa, bye. करोड़ नेट Konnichiwa. टच कर चुकी है, जो कि ये रिकॉर्ड पहले स्त्री 2 Ni hao, bye. पोटेंशियली बड़ी आसानी से Hola, bye. सुबह तक स्त्री 2 Namaste, bye. रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मगर स्त्री 2 से भी पहले ये रिकॉर्ड 11 सालों तक चेन्नई एक्सप्रेस ने अपने साथ बना के रखा था। शाहरुख खान के पास था ये रिकॉर्ड, जहां पे इनिशियली बुकिंग के दौरान के आवली टिकट सेल्स के मामले में कि फिल्म की ऐसी ऑर्गेनिक डिमांड दिख रही है कि जवान जैसी मूवीज को भी ये आराम से सरपास कर दे रही है। एंड अभी तो काफी दिन बचे हुए मूवी के ओरिजिनल रिलीज डेट को लेकर, तो एसआरके का रिकॉर्ड तो पोटेंशियली टूट ही सकता है। बाकी इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में तो It's crazy that SRK is still more popular. जहां 5.7 करोड़ से भी ज्यादा टिकट्स ऑलरेडी ये बेच चुकी है आज Wow. की डेट के हिसाब से, जो कि फिल्म रिलीज होने में भी एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम बचा है। तो प्रोजेक्टेड ओपनिंग यूएसए में ये अंदर एक्सपेक्ट कर रही है 8.2 करोड़ बनाए फर्स्ट डे के अंदर, एंड अपने वीकेंड में 1.7 मिलियन डॉलर्स ये पैसे बनाए। Damn. अगर ये सच हो जाता है तो एग्जिस्टिंग सारे पैसों के मामले में रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। एंड आई मीन जवान, पठान, पुष्पा। I know this isn't related to this movie particularly, but I'm going to the movie theaters next week for like the first time in a minute. I'm gonna take Lo on a little date and we're gonna watch Project Hail Mary. Tiger 3, I'm Animal, looking forward to it. everything. ये It's सारे important to records date your तोड़ girls देंगे। even Number after you've one been का आपको touch Hail कर Mary. सकते हैं। Yeah, we're gonna go watch that. Toxic की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो फॉरेन बुकिंग जो कि Remember the thing we watched yesterday? स्क्रीन्स मिलने के बावजूद भी, जिसपे ये माना जा रहा है कि इट्स वन ऑफ द रीजन कि टॉक्सिक ने पूरे पोटेंशियल को जीने के लिए अपना मैदान अलग से चुना। एंड आई बिलीव कि हाँ भाई, सबको परफॉर्म करने का अपना मौका मिलना चाहिए, एंड दिख भी जाए कि हाँ टॉक्सिक कितना कर सकती है। एंड वैसे भी टॉक्सिक इंग्लिश में भी शूट हुई है, तो देखते हैं कि वो क्या गेम करके चल रहे हैं। जिसपे से एक बड़ी अटपटी सी बात ये भी है कि अब थिएटर ओनर्स मनमानी के पैसे बुक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत महंगी महंगी टिकट्स देखी। मैंने अपनी आंखों के सामने टिकट प्राइसेस 200 रुपए Oh my God! They're like, oh, supply and demand. If you want the tickets, we're going to sell it a little higher. ऑनलाइन बढ़ते हुए देखी है। फिल्म की हाइप I don't think that should be the case. If you pre-bought tickets, it should be the same that if it's out 2 weeks before. Like, it's a ticket to the movie. I hate that. I don't want to see that because we see that over here in America, where if you go to a concert and the concert is super full, the people like Ticketmaster, StubHub, or companies like that will inflate the price of the ticket to adjust for the demand. And granted, they're all in their right to do so, but man, does it make it really scummy. ऐसी है कि भाई सबको जला दे। एंड टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक बीएमएस इंडस्टिंग ऑलमोस्ट 4000। You also go to the cinemas after a week? Nice. Nice. Are you going with a lady friend? एक और नया रिकॉर्ड है, इनके पोस्ट आते ही होंगे, जिनमें से ये भी मान के चलो कि एक नया सेट ऑफ स्टैंडर्ड हमें देखने को मिलेगा, जहां पे धुरंधर 2 अपने रन को कंप्लीट जब करेगी तो ये प्री एग्जिस्टिंग सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया बेंचमार्क को क्रिएट करेगी, वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें नंबर 1 तो ना सही, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर वो काफी बड़ा है। यू नो द टाइटन्स कौन एग्जिस्ट करते हैं, एंड वो बहुत पुराने तरीके से सॉलिडिफाई किए जा चुके हैं, जो कि अभी भी थोड़ा सा मुश्किल जरूर से है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस से बता दिया है कि भाई जब हम पिक्चर देखने पे आते हैं, Nah, you don't have friends? You got me, bye. रिलीज हो रही है या फिर इंटरनेशनल, We don't have lady friends to go to the cinema? लेवल तक भी पहुंच जाना। इवन लाइक नंबर 1 I follow a few of y'all from chat on Instagram, and you guys got lady friends. Only the boys? वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। I ain't mad at that either. That's how you swing. That's how you swing. It don't bother me. अपने स्पाई यूनिवर्स से आलिया भट्ट वाली अल्फा मूवी की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है, जो कि 10 जुलाई 2026 को है। बाकी अब आप देख लो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं लाइक आयरॉनिकली बोलो या फिर किसी और तरीके से बोलो, मैं धुरंधर के नंबर्स में थोड़ा सा इन्वेस्टेड हो गया था, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि ऐसी कोई फिल्म आए कि हाँ पैसे कमाए और आप भी लगे कि देख के ओ डैम ये कुछ ज्यादा है। Right here, this scene that I was literally like, for the day after, Lo and I were at the store, and I was just like, like it's a fun movie, just swinging, like that shit was fun. This is I still have this fucking song stuck in my head. I mean,
I get friends, but they're not interested in cinemas. That sucks. That sucks. To be honest, over here, going to the movies is such a rare thing. This is gonna be the first time Lo and I've been to the movies in like maybe 2 to 3 years. We boys decided to stay single and be cool uncles in the future. You know, I thought that too. And then one day I met Lo, and everything changed. So I hope you find one little Bahan and you know, find some love. Toxic Daddy's home. Durandara, Bola Beta. PJ will return to Durandara to sit on. Oh my gosh. Mohit speaking. Rinvar sign as Jessica. Rinvar sign. That's okay. Hyperbad tickets.